ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਜੀ ਤਨ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ। ਦਰਸ਼ ਬਿਨਾ ਦਿਲ ਧੜਕੇ ਮੇਰਾ, ਦਰਸ਼ ਬਿਨਾ ਦਿਲ ਧੜਕੇ ਮੇਰਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਜੀ ਤਨ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਜੀ ਤਨ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਜੀ ਤਨ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ। ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਨਾਈਏ ਜੀ ਤਨ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ। ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਨਾਈਏ ਜੀ ਤਨ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਜੀ ਤਨ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ। ਬੰਦ ਅੱਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹਨੇਰਾ, ਬੰਦ ਅੱਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹਨੇਰਾ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਖ ਬੁਲਾਏ ਜੀ ਤਨ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਖ ਬੁਲਾਏ ਜੀ ਤਨ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਜੀ ਤਨ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਜੀ ਤਨ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ। ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਯਸ਼ ਤੇਰਾ ਹੀ ਗਾਈਏ ਜੀ ਤਨ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ। ਯਸ਼ ਤੇਰਾ ਹੀ ਗਾਈਏ ਜੀ ਤਨ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਜੀ ਤਨ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਜੀ ਤਨ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ। ਪੜਿਆ ਅਜੈਬ ਨੇ ਪੱਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪੜਿਆ ਅਜੈਬ ਨੇ ਪੱਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਚਰਨੀ ਸੀਸ ਨਵਾਏ ਜੀ ਤਨ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ। 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 ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਜੀ ਤਨ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਜੀ ਤਨ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਜੀ ਤਨ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ।
ಸರಿ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅನ್ಕಮಕ್ಕಾಗ ಕೆಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಮದ್ದಲ್ಲ A machine is not there. She didn't give a machine today. Where? Sitting on it. Okay, got it. ये परम संत सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी है. This is the Bani of Param Sant Sadguru Kabir Sahib. कबीर साहब जी आज से 650 साल पीछे काशी नगरी बनारस में प्रकट हुए. आप एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा संत महात्मा थे. Kabir Sahib came into this world in Kashi about 650 years back, and he was a very renowned saint. कहते हैं वो जमाना ऐसा था, लोग पत्थर पानी और कर्मकांड से लगे हुए थे, पूजा पाठ तीर्थ व्रत में लगे हुए थे. ऐसे समय पे आप प्रकट होकर के संत मत का प्रचार किया. कहते हैं गुरु भक्ति, नाम भक्ति, सत्संग की महिमा, साध की महिमा, गुरु की महिमा, तरह तरह की वाणी लिख करके लोगों के भ्रम को दूर करने की कोशिश की. So he came into this world at a time when the society was very orthodox and people were doing all kinds of rituals, all kinds of deity worships. They would worship water, sun, fire, and these kind of things. And they would believe in all outwardly rituals. They would believe in pilgrimages and outwardly practices. So he had to come and he had to awaken the souls in that kind of a situation and explain to them this concept of Santmat and explain about the soul, the super soul, God Almighty, the path to go back to God Almighty, and about Sadguru. कहते हैं आप एक गृहस्थ आश्रम का पालन किया. कपड़ा, रेशमी कपड़ा बुन करके अपने कुटुंब और बाल बच्चे का पालन करते थे. आपकी बड़ी गरीबी हालत थी क्योंकि आपके यहाँ साधु संत हमेशा आते जाते थे.
जो कुछ घर में रहता उनको बना के देते, आप चना भिगा के खा के पानी पी के रहते। He led a family life, and he had a family, and he continued to do his practices and preach about the path while he maintained his family. And he came from very frugal uh, incomes, so the family, and that was because a lot of people did visit him, a lot of saints would come to visit him, a lot of people and disciples would come to visit him, and he would in his hospitality spend whatever little he had earned. And the कपड़ा family members would eat only gram. They would soak the gram in water and they would survive on that. कपड़ा बुन करके गुजारा करते थे। आपने गृहस्थ आश्रम को ही स्वीकार किया। So he would his income came from weaving cloth, and he would maintain his family through with that income. कहते हैं कि आप एक अच्छे आपको पहला संत भी कहा जाए तो कोई गलती नहीं। आप पहले पैदा हुए, 35 साल पीछे गुरु नानक आए, आप दोनों महात्मा एक ही समय में थे। It won't be incorrect to say that he was the first saint, and Guru Nanak Sahib also came around the same time. He came about 35 years after Kabir Sahib, so both of them practiced almost around the same time. एक बार दोनों संत महात्मा बनारस में 7 दिन तक साथ रहे, एक कमरे में बैठे रहे और बहुत कुछ बातें चली और आपस में बात करके आप जो है पूरा भारत घूम के उत्तर से दक्षिण भारत तक घूम घूम के प्रचार के लिए निकले संत मत का। और गुरु नानक जी पाकिस्तान, अरबिया, दुबई, मास्कट की तरफ गए। So once, for about 7 days, both Kabir Sahib and Nanak Sahib, both of them stayed together in Varanasi. And after that, Kabir Sahib preached throughout the length and breadth of the country. He went from the north of India to the south, and Nanak Sahib went from the northern parts of India into Pakistan, Afghanistan, and then further right up to the countries in the Middle East. तो कहते हैं इन दोनों महात्माओं ने बहुत तकलीफ उठाए संत मत प्रचार के लिए, लेकिन जमाना ही कुछ नया था। माने ये लोग पहले संत थे, बहुत कम लोग उस रास्ते में आए। So they traveled a lot to explain the teachings of Sant Mat, but because the people were so orthodox and they were so much glued onto their own practices, there were very few disciples who came to on this path following the teachings of these great saints. तो आप फरमाते हैं जिस तरह से सूर्योदय होते ही अंधेरे का पता नहीं चलता, अंधेरा अपने आप हट जाता है, कहते हैं ऐसे ही अंदर ज्ञान का प्रकाश होते ही घट में अज्ञान रूपी अज्ञान जो करोड़ों जन्मों से हमारे घट में अज्ञान का अंधेरा है वो भी दूर हो जाता है। So Kabir Sahib says like with the first ray of the sun at the time of sunrise, the darkness is dispelled. Like that, when we go within and we manifest the light within, then all the darkness and all our ignorance is also dispelled. कहते हैं कि इस तरह से लोभ, हाँ, सुगत गई एक लोभ से, भक्ति गई अभिमान। कहते हैं कि अंदर जो अच्छे गुण थे, एक लोभ के कारण से अच्छे गुण भी खत्म हो जाते हैं और उसकी जगह जगह बदनामी होने लगते हैं। माने एक अच्छा इंसान भी बुरा बन जाता है लोभ के कारण। और कितना अच्छा भगत हो, अगर उसके अंदर अहंकार आ जाए तो भक्ति का भी विनाश हो जाता है। He says that however virtuous a person is, if he is overcome by greed, then he has to face
a downfall. He has to face embarrassment as a result of the of as a result of his greed. Likewise, however good a disciple is, he he if he if ego overcomes him, then again he will lose that benefit of that devotion that he has done. कहते हैं कि भक्ति, सच्ची भक्ति करने का मतलब अपने अंदर दीनता नम्रता आती है। हम जैसे जैसे गुरु का दिया हुआ सुमरन भजन करते हैं, हमारे अंदर परिवर्तन आता है। जैसे जैसे मन निर्मल होता है, परिवर्तन जरूर आता है। हमारे जो अवगुण दूर होके अच्छे गुण प्रकट होते हैं। क्षमा, शील, संतोष और धर्म, ये सब चीजें आ जाती हैं और अवगुण सब दूर हो जाते हैं। तो भक्ति में दीनता नम्रता आती है। When we do our devotion, we by doing our meditations, we automatically imbibe the virtues, and slowly the vices start leaving us, and all the vices are replaced by compassion, love, and devotion towards the master. मा, So हाँ, महात्मा अपने को सबसे छोटा से छोटा मानते हैं, सबको बड़ा मानते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। उनके निगाह में अपना पराया नहीं, शत्रु और मित्र नहीं, और पापी और पुण्यवान नहीं। जो भी उनके पास आता है, सबको एक निगाह से वो उनको देखते हैं, दया करते हैं। the Mahatmas are very humble, and they always consider themselves as the lowest of the low, and they look upon everyone with an equal uh, on equal basis, whether he has good deeds or bad deeds, or whether he's a whatever virtues he has or whatever vices he has, all of this, whether he is rich or poor, everyone is looked at with the same equality in the eyes of the Mahatmas. कबीर के पास कुछ पंडित लोग वाद विवाद के लिए भी आते थे। आप दीनता नम्रता के एक बड़े अच्छे मिसाल थे। वो सबको आते, जो भी आते उनको लोटा पानी देते और उनको आसन जो है कि ये करके बिठाते, उनकी इज्जत करके भेजते थे। So many people would visit Kabir Sahib, and they would be from different, following different practices. But Kabir Sahib always, with humility, he would extend his hospitality to them, make them sit on a chair, and give them extend all the hospitality to them. इसीलिए हम लोग भी देखते हैं संत महात्मा होके भी उनके अंदर कितनी दीनता नम्रता होती है, उनके अंदर अहंकार की बू नहीं आती। So we see this always in all the masters, that they are always humble, and you will never notice the stink of ego in the masters. वो हमेशा अपने गुरु की महिमा का बयान करते रहते हैं और बार बार अपने सतगुरु से प्रार्थना करते हैं। उनके भजन में कितना दीनता नम्रता छलकता है। They always, in all their talks also, they are always praising their masters. Everything they consider has been uh, because of their masters, and you can see this in their bani also, how much their humility and their love and devotion is all reflected in all their banis. भक्ति भाव बादो नदी सबे चली गहराई। भक्ति भाव बादो नदी सबे चली गहराई। सरिता सोई सराइए जो जेठ मास ठहराए। जो
तब कबीर साहब जी कहते हैं कि नदियाँ बरसात में सब बढ़ चढ़ के चलती हैं, सब अच्छी तरह से चलने लगती हैं, जो सूखी हैं वो भी पानी में भर के चलने लगती हैं, लेकिन वही नदी अच्छी नदी है, उसी की सराहना होनी चाहिए जो जेठ मास ठहराए, जो गर्मी के समय में भी चलते रहती हैं, जिसमें पानी रहता है, वो नदी सबसे श्रेष्ठ है। So he gives an example of the rivers. So all the rivers, when it rains, all the rivers, even rivers which are dry, they start flowing. But he says that those rivers should be praised, which flow throughout the year, and even in the summer when it is hot and dry, these rivers, they do not stop flowing and they give water. Such rivers should be praised. इसका मतलब कहते हैं कबीर साहब के समझाने का कि जब हमें इज्जत मिलती है और दुनियावी फायदे मिलते हैं, गुरु के यहाँ सब कुछ मिलता है, तब तक हम वहाँ दौड़ धूप के भक्ति करते हैं, ये करते हैं। जब वहाँ कुछ नुकसान हो जाता है या अपना साथी कोई साथ छोड़ के चला जाता है, तो तुरंत हम अपने अंदर अभाव ला लेते हैं और हमारा भक्ति और प्रेम सब खत्म हो जाता है। The meaning of what he says is that when we see the disciples, they come to the master, and so long as they are getting the importance given by the master, and so long as their lives are comfortable and they are getting good incomes, they continue to come. But if some calamity befalls them, if they lose a spouse, or if they have losses in their incomes, or if someone speaks not to their liking, then they immediately stop coming to the master. They talk ill about the master. So he refers to the example of the rivers by for such people. तो कहते हैं कि कहने का मतलब तकलीफ आवे, मुसीबत आवे या और कोई बड़ी से बड़ी मुसीबतें आ जाए, लेकिन जिसकी भक्ति और विश्वास ऐसे ही अटल रहता है, वही सच्ची भक्ति है। So that the meaning of this is that those who come to the masters and they continue to be resolved in their faith, they have unwavering faith in the masters, even if some difficulties befall them, then those are the people who are to be praised. क्योंकि जो गुरुमुख लोग हैं वो गुरु को मेन मानते हैं और रात दिन उन्हीं की याद में रहते हैं और दुनिया को तुच्छ समझते हैं। वो दुनिया का कभी इतना ये नहीं करते गुरु के आगे। Because such people, they consider the masters as the main they give importance to their master, and they consider all the other worldly matters secondary to their master, and therefore when such things happen, they do not waver. कहते हैं देखो गुरु साहबानों में भाई लहना जो कि 30-35 लोग को लेके दर्शन के लिए देवी के अपने कुल देवी के दर्शन के लिए लेके जा रहे थे। रास्ते में गुरु नानक का सत्संग मिला। जैसे ही गुरु नानक जी का दर्शन हुआ, सत्संग सुना, उनमें बड़ा परिवर्तन आया क्योंकि वो संस्कारी आत्मा थी। तो दूसरे दिन जब ये उठ के जाने लगे, सब लोग कहते चलो बहुत दूर जाना है, 30-35 किलोमीटर जाना है, हम लोग यहाँ ही लेट करेंगे तो कब पहुँचेंगे। तो इन्होंने पैसा दे दिया कि भाई तुम जाओ और तुम जाके आने तक मैं यही सत्संग में रहूँगा और आप आएंगे आपके साथ पीछे चलूँगा। उनको किराया दे दिया क्योंकि आप एक बड़े आदमी थे, व्यापारी के घर पैदा हुए थे, तो 35 लोगों का खर्चा दे के देवी के दर्शन के लिए हर साल ले जाया करते थे। तो कहते आप उनको तो भेज दिया, आप वही
जो है गुरु नानक के सत्संग में सेवा में रह गए। तो देखो एक बार रुके, फिर वो लोग एक हफ्ते के बाद लौट के आए। कहते हैं चलो अब घर चलें, कहते नहीं आप जाओ, अब मेरा यही घर है और मेरा सब कुछ यही है। तो आप लौट के फिर कभी उस तरफ मुंह नहीं किया, आप गए तो गुरु के ही बन गए। We can see the example of Bhai Lehna. Bhai Lehna was a prosperous person, and he would often uh, pay for the visit to their deity, goddess, uh, which was the temple was about 35-40 kilometers away, and he would pay for about for his fellow villagers, which would be about 30-35 villagers, and he would pay for their food and travel and return. So it would take about a week for them to go and make their offerings to the goddess and come back. So once when they were going, Guru Nanak Sahib's satsang was going on, and Bhai Lehna suggested that they sit and listen to the satsang while they were on their way to the goddess. Now, when he listened to the satsang, Bhai Lehna was transformed, and he decided that he will continue to stay there. So when after the satsang, everyone said that we are getting late, let us leave for the for our on our journey. He said that I will continue to stay here, and he paid money for all of them so that they could go and visit the goddess and come. So he said, you go and visit, and on your way back I will come along. So all of the villagers left for visiting the temple, and after about 7 days they returned. Now when they returned, also Bhai Lehna said that I'm not coming with you, I'm going to continue to stay here with Guru Nanak Sahib. So he considered Guru Nanak Sahib as the main, and he left everything. He felt everything else is secondary. तो कहते हैं कि यहाँ तक कि आपकी सेवा और आपका भक्ति से गुरु नानक बहुत खुश थे। उनके 20-22 लोग प्रेमी लोगों में ये सबसे अच्छे थे। तो कहते हैं आपकी बड़ी परीक्षा लेकर के भी गुरु नानक ने आपको ही अपनी जगह पे बिठा के गए। So he was a very great Sevadar, and Guru Nanak Sahib had a lot of love and affection for Bhai Lehna. And amongst nearly 22 astute followers of Guru Nanak Sahib, eventually he chose Bhai Lehna to succeed him. तो कहते हैं कि वही भक्ति सच्ची भक्ति है जो दुख में मुसीबत में एक ही समान बनी रहे, उसका प्रेम प्यार टूटे नहीं। So that devotion is truly to be praised, which will not get disturbed by any worldly matters, and which will remain unfaltered and resolute throughout. कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होय। कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होय। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल कोय। जाति वर्ण कुल कोय। फिर कबीर साहब जी इशारा देते हैं कि कामी क्रोधी लालची, जिनको काम वासना ज्यादा हो, क्रोध ज्यादा आता है और कहते हैं लोभ गुण ज्यादा है, तो ऐसे लोग भक्ति के लायक नहीं होते और इनसे भक्ति नहीं हो सकती। Kabir Sahib says that those who are overcome by lust or anger or greed, such people cannot take to devotion. They are not unable to do their devotion.
ये लोग समय पे भक्ति से गिर जाते हैं और गुरु भक्ति में अभाव आ जाता है, धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, क्योंकि इनके अंदर लोभ है, दुनिया के धन की आशा है, मान बढ़ाई की आशा है, इज्जत है। तो कहते हैं कि ये भक्ति में विघ्न है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। कहते हैं भक्ति तो कोई बहादुर सूर पुरुष ही करता है, अपना जात कुल इज्जत मर्यादा सब छोड़ करके भक्ति में लग जाता है। So Kabir Sahib says that such people who have greed, anger, and lust, such people are unable to do devotion, and wherever they are doing devotion, they falter because they are overcome at some point or the other by ego or their greed and such pulls that are there because of these vices, that they are unable to uh, do this, do the devotion. So Kabir Sahib says that only those people who can do good devotion are people who have pulled themselves above these vices and who are not, who are above uh, caste or creed, and who do their devotion unwaveringly, uh, up, overcoming all of these vices. क्योंकि भजन सुमरन में आसान नहीं है, बहुत तकलीफें होती हैं, आसन से दृढ़ होना पड़ता है, पैर दर्द करते हैं, कमर दर्द करती है, उसकी भी परवाह नहीं किए हुए जो 4-4, 5-5 घंटे की बैठक बनाते हैं, धीरे धीरे उसमें वो सफल होते हैं। We have to remain very steadfast in our practices, and we have to be very, very resolved in our mind. And we, therefore, uh, when we do our devotion, if we have all these vices and such other things, then we are not able to sit in for long hours in meditation. Sometimes our legs pain, sometimes our back pains, and all these things we are unable to overcome and rise above all this for doing our devotion. क्योंकि हमारा प्रेम प्यार दुनिया दुनिया की चीजों से लग चुका है, और प्रेम प्यार सदगुरु और नाम की तरफ ना होने से भजन हमेशा रूखा फीका होता है और मन टिकता नहीं, क्योंकि मन को टिकाने के लिए प्रेम की जरूरत होती है। Because by all of these things, all of these vices, our mind is entangled outside in this world, and therefore when we sit for meditation, when we do our devotion, the mind is always wavering and we are not able to enjoy that meditation. We do not get that fixation in the meditation, because for being fixated in meditation we need to have that love and affection which should be singularly focused towards our master. So where because of these vices and other things, we have that attention, that love and affection outwardly, we are not able to sit for long hours and get that enjoyment in our meditation. तो भजन में बैठने से पहले हम अपने अंदर कुछ प्रेम प्यार गुरु के प्रति प्रकट करके बैठे तो थोड़ा बहुत फायदा मिलता है। वो प्रेम प्यार कैसे प्रकट होगा? संतों ने बहुत अच्छी अच्छी अपने गुरु के प्रति वाणियां लिखी है, जिसको पढ़ने से गुरु के प्रति हमारा ख्याल जुड़ जाता है और प्रेम और प्यार पैदा होता है। या कोई प्रेम वाणी जो स्वामी जी महाराज ने 4 किताबें इतनी मोटी मोटी प्रेम वाणी लिखी है गुरु के प्रति, वो भी बड़ी अच्छी वाणियां हैं। तो कोई ऐसी वाणी ले पढ़े जिससे हमारे अंदर प्रेम और प्यार पैदा हो, तो ऐसा प्रेम लेके हम जब भजन बैठेंगे तो थोड़ा मन टिकता है। So we have to develop that love and affection for our master, for being successful in our meditation. Uh, what we can also try is before sitting for meditation, we should sing some bani, sing some bhajans written by the masters, because they have written that with a lot of love and affection. And when we read that bani, that has an effect on us, and we are able to
get some benefit out of that. Or we can even read the Bani of Swamiji Maharaj. He has written 4 volumes of filled with love and affection for his master. So we can read from those volumes, and that way it will help us get some love and affection when we sit for our meditation. और उस समय सुमरन चलना चाहिए, लेकिन मन धोखा देता है। थोड़ा टाइम जैसे ही 2 4 6 सुमरन चला कि मन बाहर भटक जाता है, भाग जाता है। हम ध्यान बैठे होते हैं लेकिन मन वहाँ नहीं होता है। तो हम मन के ऊपर निगरानी रखें कि मन अभी अंदर है या कहीं गया है। अगर वो वहाँ सुमरन में नहीं है तो उसको मन को पकड़ के ला के सुमरन से जोड़े, तो फिर थोड़ा टाइम में भाग जाता है, फिर ला के जोड़े। तो कहते यही अभ्यास है। धीरे धीरे तुलसीदास ने भी कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, लेकिन अभ्यास करना पड़ता है। When we sit for meditation, the mind also does not allow us to do our Simran. After doing Simran for about 3 4 times or 5 6 times, the mind immediately starts going out, and it deludes us in other thoughts. So we have to be also attentive to see where the mind is getting focused, and the moment the mind goes elsewhere, we have to catch the mind and bring him back on doing the Simran. So again, after some repetitions, again the mind will go away. Again, we have to be attentive, bring the mind back. So our practice should be to be attentive to ensure that the mind keeps doing the Simran. So the masters also say that this is the practice this is the practice that we have to do by sitting in meditation, that is of focusing the mind on doing our Simran. And the masters say that by doing so continuously and regularly, we will be able to gradually start getting that fixation, getting that focus. And masters say that those who do this regularly, they are able to move from being in the physical form to being the intelligent one or being the subtle one. They are able to rise above the physical, uh, uh, above this physical body. तो इसीलिए महात्मा लोगों ने कहा है, तन थिर, मन थिर, बचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहें कबीर एक पलक को कलप न पावे कोई। कहते भजन में शरीर स्थिर हो, दोनों आंखों के बीच में मन स्थिर हो, और वाक्य जबान बंद हो जाए। और कहते हैं आत्मा के 2 अंग हैं, सुरत निरत। आत्मा को दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। देखने वाली शक्ति को निरत कहते हैं, सुनने वाली शक्ति को सुरत कहते हैं। तो कहते ये भी नाम का रूप हो जाए। ये पांचों एक बार अगर सुमरन में रुक गए, तुरंत प्रकाश हो जाता है घट में, 1 सेकंड में। ये पांचों स्थिर होना। So the masters say that the practice of meditation is when you are able to keep your body still and not move your body during your practice, and keep the attention of the mind between your eyes. So at the eye center, keep your mind focused and don't allow the mind to go away from there. And there are 2 faculties of the soul, the faculty of listening and the faculty of seeing, Surat and Nirat. So we have to also ensure that those 2 faculties are also imbibed in that repetition that we are doing. So when the body, mind, Surat and Nirat, all of them are focused on the repetition of the holy names, then within 1 second we will get to see light inside. So it is all about making all of these still at the same time. तो इसीलिए कहते हैं कि शरीर भी स्थिर हो, दोनों आंखों के बीच में मन भी स्थिर हो, बचन भी स्थिर हो, सुरत निरत, ये पांचों स्थिर हो जाएं तो कामयाबी होती है। ऐसे भी अगर हमारा सुमरन चलता है लगातार, करीब लगातार
ये मन दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, कहीं भी जाएगा तो शरीर में आना ही पड़ता है इसको। और इस तरह से 2 घंटे के बाद में मन सुस्त होता है दौड़ दौड़ के, फिर स्थिर होने लगता है मन अपने आप। हम उतना टाइम तक बैठ नहीं पाते 2 घंटे के बाद मन स्थिर होता है। So we have to keep the body still, and we have to keep the mind still at the eye center. We have to also keep our tongue still and not move the tongue. And we have to keep the Nirat and Surat still. So all of these five have to be still, and then we will be able to manifest the light uh, within. Now, what happens is the mind doesn't remain still because we are all outwardly, we have all these pulls. So the mind keeps running out, and you have to keep bringing the mind back at the eye center. So long as your focus is at the eye center, your mind will remain fixated. The moment your focus goes away from the eye center, your the your attention again gets dissipated. So we have to focus that, and when all of this is focused, we will be able to manifest that light within. Now, when what happens is when the mind keeps on pulling us outside, we this process keeps happening, and that is the practice that we have to do. But the mind also gets tired, and the mind takes about nearly 2 hours to get tired. So when we sit for meditation, after about 2 hours of this practice, the mind will also get tired going outside, and it will also start becoming still and stay focused at the eye center. And that is when all of the rest, the Nirat, Surat, everything will become still. But unfortunately, we don't have the stamina, or we do not have the will to sit for that long, and we give away our practice before we sit for 2 hours. So the true meditation you will be able to enjoy only if you are able to sit beyond 2 hours. तो इसीलिए संतों ने 2.5 घंटे का बैठक बोला है, 2 घंटा सुमरन ध्यान और आधा घंटा भजन। तो उसके बाद में थोड़ा आवाज भी सुनाई देने लगता है, प्रकाश भी दिखाई देने लगता है, तो थोड़ा आनंद आता है। लेकिन उतना टाइम हम बैठ नहीं पाते हैं, बैठक बना नहीं पाते, क्योंकि हम संसारी हैं, हमें गृहस्थ आश्रम में रहना है, नौकरी धंधा बाल बच्चा करना है। तो कहते इसमें क्या होता है कि हमारा जो ख्याल टिक नहीं पाता है। So therefore the masters say that you have to do your meditation for 2.5 hours. At least sit for 2 hours in your meditation and try to do your bhajan, that is listening to the sound current and seeing within, for about half an hour. So when you are able to develop that practice for sitting continuously for 2 hours, you will start experiencing the manifestation of that sound current within and the light within, and that will give you a lot of enjoyment. But we are all entangled outside in our families, in our work, and there are so many other pressures. So we are not able to focus for that long. We are not able to sit that long. So we don't have the stamina because we are so outwardly focused. क्योंकि हम लोग भी अभी उम्र हो गया, अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैर नहीं मोड़ के बैठ सकते। पहले 4-4 घंटे बैठते थे, जबकि उम्र थी। हम लोग गुफा में 4-4 लोग भजन बैठे थे, तो उस समय 4-4 घंटे की बैठक होती। एक बार बैठ गए 4 घंटा, तो आराम से बैठते थे, आदत हो गई थी। और कुछ दिन दर्द होता है, सहन करते करते वो दर्द खत्म हो जाता है, उसको वही आदत बढ़ते जाती है। तो उस समय का समय हम सोचते हैं तो बहुत फर्क है। और अभी जो है मन भी ये नहीं, क्योंकि अभी पैर दर्द जब से चालू हुआ बैठ ही नहीं पाते हैं। अभी कुर्सी पे बैठना पड़ता है, पहले नीचे 4-4 घंटे बैठ पाते थे। तो समय की बात होती है, इसीलिए कहते हैं कि उम्र में ही ऐसा काम हो सकता है जबकि शरीर मजबूत है और आपका जो है शरीर में ताकत है बैठने की 3 घंटा 4 घंटा, तो ही ये काम उसी समय पे हो जाता है। लेकिन वो समय तो निकल गया, अब आ गया बुढ़ापा। बहुत लोग कहते हैं कि अरे क्या इतना जल्दी है, बुढ़ापे में कर लेंगे।
अब बुढ़ापे में तो इंद्रियां शिथिल हो जाती है, मन चंचल हो जाता है, हाँ, मन अपने बस में ही नहीं रहता है। जो 70 साल की सोच है वो सब दिमाग में चलते रहती है। So earlier, I had the practice of sitting at least for 4 hours. When we were in the gufa, in the cave, we used to sit for meditation एनिमल डड्डी, at पहाड़ आश्रम, Animal Dedi in the Pahad Ashram. We used to sit for each session would be at least for 4 hours. So as soon as we sat, it would be at least for 4 hours that we would continue, and it had become very routine for us to sit for continuous periods of 4 hours. But now it is difficult considering the pain in the knees. It is difficult to sit like that because the knees don't fold, and we need a chair to sit. So it's not possible to sit for that long hours of 4 hours. So it is therefore necessary that we also do our practices when we are healthy, and we should use that time to do our practices. A lot of people say that what is the point of doing all our meditation and all in such early age? Now we are in the prime, we should do this only in the last phase of our life when we are old. But then when you're old, your faculties have given up, your everything else is all scattered, your mind is so scattered that it carries 60-70 years of thoughts, and so you're not able to focus at all and sit. So you have to do it when you are fit and try to increase your time for meditation. भक्ति द्वारा साकेरा राई दसवें भाग, भक्ति द्वारा साकेरा राई दसवें भाग, मन रावत होएरा कैसे होए समाव, कैसे होए समाव। तो वही कबीर साहब जी कहते हैं मुक्ति का दरवाजा साकरा बहुत छोटा है, क्योंकि जब हम साधन करके 9 से 10वें में आते हैं, 10वें दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं, तो उसी को वो इतना छोटा है मुक्ति द्वारा कि राई 10वें भाग, सरसों होता है इतना छोटा, सरसों के 10वें हिस्से से भी छोटा होता है और उसमें हमारा मन तो हाथी बना हुआ है मन एरावत हो रहा, कहते मन तो हाथी है, बना है, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार भरा है। अब बताओ उसमें से कैसे प्रवेश हो पाएगा? So Kabir Sahib says that the door of salvation is very, very small and very, very fine. It is the size of less than 1/10 of a mustard seed. So that is the size through which the attention of the soul has to pass and go with for us to get our salvation. When we cross the 9 doors and we go to the 10th door, that 10th door, the size is that small, that refined, which is 1/10 of a mustard seed. But we have to carry our mind inside that fine place, and that mind has become like an elephant. It carries its ego, greed, lust, all the passions and all the attachments. So by all of this, it has become so big that it cannot enter that fine door of salvation. इसीलिए पलटू साहब ने एक भजन में लिखा है, मन महीन कर लीजिए, हाँ, तब गुरु लागे हाथ। कहते मन को पीस पीस के इतना महीन कर लो कि वो अंदर आराम से प्रवेश कर सके। Paltu Sahib has also referred this in his Bani. He says that you grind your mind, you keep grinding your mind so that it becomes so refined
that it can pass through that door, and then you can manifest the radiant form of the master within. मन कैसे महीन होएगा? नाम सुमरन ध्यान से। जितना हम सुमरन ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतना मन निर्मल होते जाएगा, उतने पाप हमारे कटेंगे, हमारा सिर का भार उतना कम हो जाएगा और एक दिन मन महीन हो बारीक हो जाएगा और आत्मा के साथ में आराम से उस मुक्ति दरवाजे से ऊपर प्रवेश कर जाएगा। So how do you grind the mind, or how do you refine the mind? It is by doing your bhajan simran. When you do your simran, the mind keeps on getting purer, and we keep redeeming the burden of karmas, the filth of karmas that it is carrying, and that way we refine the mind and grind it such that it is able to go through that very fine door of salvation. इसीलिए संत सुमरन भजन पे जोर देते हैं, क्योंकि अभी एक ही रास्ता है, जो बैठ नहीं सकते हैं, भजन सुमरन नहीं हो पाता है, तो सुमरन करें ज्यादा से ज्यादा, चलते फिरते घूमते काम करते सुमरन करें। सुमरन जितना ज्यादा करेंगे तो एक दिन मन से चालू हो जाएगा। पहले जबान से करते हैं, फिर मन से चालू हो जाता है सुमरन, उसको अजपा कहते हैं। जब मन से चलने लगे तो कामयाबी मिल जाती है, तो अपने आप धीरे धीरे रूह चढ़ाई करने लगते हैं। Therefore, we should focus on doing our Simran. And for those also who cannot sit for long hours to do their meditation, or who have physical difficulties, they should focus on doing their Simran. Whether when they are walking, when they're eating, or traveling, or doing any such other activity, they should try to continuously do their Simran. When we improve our Simran, at some point the mind starts doing the Simran on its own, and that is called Ajapa Simran, or the continuous Simran, which happens without consciously having to do the Simran. Your mind will continuously start doing the Simran, and when we reach a stage like that, then we can safely believe that yes, we have done our devotion, when the mind starts doing the Simran on its own. तो कहते हैं इसीलिए मन कब मन में सुमरन चलेगा? जब मन निर्मल हो जाएगा, और मन निर्मल करने के लिए सुमरन की जरूरत है। और मन निर्मल हो गया तो समझो कि धीरे धीरे उसको अजपा, इसीलिए तो कहा है जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सार शब्द चिन्हे बिना फिर भटका खाए। कहते हैं जाप भी नाश है, अजपा भी नाश है, अनहद भी नाश है, क्योंकि वो अनहद जो है ब्रह्म के नीचे का शब्द है, वो भी नाश होता है। जब सार शब्द पार ब्रह्म का शब्द जब तक प्रकट नहीं होता है तो मुक्ति का सवाल पैदा नहीं होता। So the mind will be able to do that continuous Simran, do that Ajapa, only when it is very pure and clean. And to do that, to make the mind pure, we have to continuously do the Simran forcefully in the mind. We have to consciously do the Simran, and that will cleanse the mind. And then at some point, the mind will be clean enough and it will start doing the Simran on its own. The masters say that the Simran dies, then the Ajapa dies, and then the Anhad dies, and till we do not manifest the Sar Shabd, पार ब्रह्म शब्द, which is at Parbrahm, we will keep on coming back into this world and go through the cycle of life and death. So Ajapa is the state of Simran which is being done by the mind. After that we manifest the sound current, and that is the Anhad, that is the sound current which takes us from the eighth plane to the Parbrahm, and beyond that it is the Sar Shabd, beyond Parbrahm it is the Sar Shabd. So the masters say that the Simran, the Ajapa, and the Anhad all are subject to destruction. Till we do not manifest that Sar Shabd, we will not be able to get out of this compound of Kal and out of this cycle of life and death. वो मुक्ति धाम है। पार ब्रह्म को संतों ने मुक्ति धाम कहा है, वहां जाके आत्मा मुक्त होती है। So the saints have called that as the door of salvation, that is Parbrahm, where the soul can be free from these worlds of Kal.
हाँ। कबीर गुरु की भक्ति बिना दृग जीवन संसार, कबीर गुरु की भक्ति बिना दृग जीवन संसार, धुआं का साधु लहर जातन लागे बार, जातन लागे बार। तो वही कबीर साहब जी कहते हैं कि कबीर गुरु की भक्ति बगैर हमारा ये जीवन धिक्कारास्पद है। ये जीवन कैसा है? कहते हैं जो कोहरा पड़ता है या तो धुआं होता है, खाना बनाते वक्त धुआं आकाश में जाता है, वो एक पहाड़ जैसा नजर आता है, अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा भी हवा का झटका लगता है तो टूट जाता है। कहते हैं ऐसे ही हमारा जीवन क्षणिक है। So Kabir Sahib says that if we are not doing the devotion in this life of our Sadguru, then it is not worthwhile to live, and we have to do our devotion. Uh, it is like the smoke which comes out when we are cooking, and that smoke goes up and it looks it goes up straight, but with the slightest of wind it scatters all over the place. So like that, there is no permanence in this life unless we are doing that devotion. तो इसीलिए कहते हैं गुरु के भक्ति के बगैर इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है। संत मत में पहला गुरु भक्ति है, क्यों? गुरु की कृपा से हमें परमात्मा से मिलना है, क्योंकि गुरु को यहाँ के बारे में भी पता है, परमात्मा के बारे में भी पता है। अब हमें परमात्मा से मिलने के लिए गुरु की जरूरत होती है। अब गुरु के बगैर हम परमात्मा से कभी नहीं मिल सकते। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले संत मत में गुरु भक्ति। गुरु भक्ति का मतलब सत्संग, भजन, सुमरन और सेवा, ये तीनों करके गुरु को खुश करना, गुरु को अंदर प्रकट करना। So the Kabir Sahib emphasizes on Guru Bhakti, emphasizes on the devotion of the master, because that is the very foundation and the first step on this path of Santmat. Because the master is manifested here and he is in front of us, and inside he is connected to God Almighty. So it is only with the help of such an attained master that we will also be able to overcome everything and go along with him back to God Almighty. So the first step on this Santmat is to please the master, to get the grace of the master by doing his devotion. So that is by listening to satsangs, by doing our meditation, and by doing seva. By doing these three things, following his teachings, doing his bhajan simran, and doing selfless service, we are able to get the grace and the pleasure of the master. And that is how we are able to step towards our salvation. क्योंकि हमारे सिर पे करोड़ों जन्मों के कर्मों का भार है। वो भार कैसे खत्म होगा? प्रेम से सत्संग सुनने से भी बहुत सारे कर्म कटते हैं, भजन सुमरन करने से भी कर्म कटते हैं, और समय मिल गया कहीं भंडारा भिंडारा होता है, वहां सेवा चलता है। संगत की सेवा गुरु की सेवा होती है। तो कहते हैं सेवा करना, तो इससे भी हमारे बहुत सारे कर्म कटते हैं जब हम प्रेम से सेवा करते हैं। लेकिन सेवा में अहंकार नहीं आना चाहिए। दीनता नम्रता लेकर के नाम का सुमरन करते हुए सेवा करना चाहिए। किसी की निंदा चुगली करते हुए, किसी के बारे में बुरा सोचते हुए सेवा नहीं करना चाहिए। So the mind is carrying the burden of karmas from millions of previous lives, and it is burdened by all of these karmas. So if we want to get salvation, we have to get ourselves free from this burden of karmas, and to do that
when we go to satsangs, we listen to the satsangs lovingly, then we are again cutting down that burden of karmas by the grace of the master. Likewise, when we do our bhajan simran, we are again cutting down those karmas. And similarly, when we attend some bandara or we attend some functions in the praise of the masters, we do seva, we do some selfless service there. That also results in cutting down our karmas. But when we do our seva, we have to do it lovingly and without any ill feelings for others, without engaging in any kind of slandering, or without any kind of envy or jealousy. And we should do it selflessly and do it for the love of the master. तो कहते इस तरह से हमारे कर्म करते करते एक दिन मन निर्मल हो जाता है और धीरे धीरे हमारा रूहानी सफर स्टार्ट हो जाता है और 9 से हम 10वें में आ जाते हैं और जहाँ गुरु बैठा है शब्द रूप में वो प्रकट हो जाता है और गुरु को प्रकट कर लेने तक हमारी ड्यूटी है और आगे गुरु की ड्यूटी है. So, by doing this, we reduce the burden of karmas and make the mind pure. And when the mind becomes pure, our spiritual path begins. We are able to leave the 10 doors of this body and come to the 10th door, that door of salvation. And beyond that, the master who is in the form of Shabad, who's in the form of sound current at the eye center, he manifests. And when when we manifest the radiant form of the master within, then we can say that our full first stage of uh, doing Guru Bhakti, of doing the devotion of our master, comes to an end. जब गुरु प्रकट हो जाता है तो हमारी गुरु भक्ति पूरा होती है. एक बार गुरु अंदर प्रकट हो गया तो वो कभी छोड़ के जाता नहीं. 1 सेकंड के लिए भी आप ध्यान स्थिर करो, गुरु अंदर हाजिर हो जाता है. आप उनसे कुछ भी पूछो, हर प्रश्न का जवाब देता है और हमेशा वो साथ रहता है. चाहे आप अमेरिका जाओ, चाहे जंगल पहाड़ों में जाओ, गुरु हमेशा साथ रहता है. So that is where, once we manifest the master within, the stage of Guru Bhakti is said to have been achieved. And once the master is manifested within, then the master does not leave us for even 1 second. He is always with us, and whatever he talks to us, whatever questions we have, he answers those questions. And if we are going anywhere, we go to America from here, he will be with us there. If we go in some jungle or we go in some mountains, he will be there. So he is always with us, and he will not leave us for a second. लेकिन गुरु को प्रकट करना जरूरी है. यही संत मत का मेन है कि गुरु भक्ति करके गुरु को प्रकट करना. गुरु अंदर प्रकट हो गया तो काम बन गया. तो आगे गुरु की ड्यूटी तो वो खुद लेके जाता है ऊपर, मंडल बाई मंडल, हर जगह वो साथ रहता है. तो कहते हैं गुरु की बाहर भी जरूरत होती है और अंदर में भी गुरु की जरूरत होती है. So once we have manifested the master then takes care of the soul and takes the soul to the higher planes. So in Santmat, therefore, the emphasis is on doing the devotion of the master. So once we do that devotion of the master and we manifest the radiant form of the master within, we have done our duty, our devotion of the master. After that, it is the duty of the master to take the soul back to God Almighty. So he handholds the soul throughout all the higher planes, and plane by plane he takes the soul until it goes back and merges with God Almighty. तो बहुत जरूरी है. इसीलिए कबीर साहब ने दूसरी बाणी में लिखा है, गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव प्रलय हो जाई. कहते हैं गुरु से लगन लगाना बड़ा कठिन है. क्यों? हम 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, हजारों करोड़ों जन्मों से दुनिया से लगन लगा चुके हैं. दुनिया के सामान के हम उसी से प्रेम प्यार कर बैठे हैं. आज उससे दूर होना बहुत मुश्किल हो गया है. लेकिन ये काम कब सुलभ होएगा?
सुमरन। सुमरन करके जब कर्म कटेंगे, हमारा मन निर्मल होएगा तो ये सरल हो जाएगा। So the masters say that this devotion of the master is very difficult. And it is difficult because it is not a matter of one or two lives, but hundreds of millions of lives that we have had before. We have been attached to this world, and we are carrying all those karmas with us. All that burden is with us, and our attachments are so deep. So it is therefore very difficult for us to uh, unshackle us from those attachments and do the devotion of the master. So the only way that the masters say that you are able to unshackle yourself to get out of these attachments uh, is by doing your simran. It is only by the simran that you will be able to cut off all your attachments of this world and be able to do your devotion of the master. क्योंकि वो नाम सुमरन ही है जो आपके अंदर भक्ति के गुण पैदा करेगा, भक्ति के रास्ते पे चलने की ताकत बख्शेगा, और वो सुमरन ही 9 से 10वें तक लेके आएगा, और जो सुमरन दिया है उससे मिलाएगा। So it is the simran which will develop your love and affection for the master. It is that simran which will give you the will and the motivation to do your meditations, to go within. And it is that which will eventually, it is the simran which will eventually take you to your master and get you to meet your and manifest your master within. तो बहुत जरूरी है कि अगर हम शरीर थक गया है, भजन में नहीं बैठ पाते हैं, तो सुमरन के पीछे पड़े, चलते फिरते काम करते जब खाली रहते हैं सुमरन करने की आदत डालें। थोड़ा दिन जबरदस्ती करना पड़ता है, नहीं तो मन सुमरन से जुड़ना नहीं चाहता है। तो इसीलिए बाबा जी ने एक भजन में लिखा है, जिद्द ही करके सिद्ध ही होना, मन के हारे हार न जाना, जैसे सुरमा ठामे ठाम, मेरो मन क्यों न बजे सतनाम। So, therefore, if our bodies are tired, if we are not able to do meditations for long hours, then we should make it a point to do our simran and continuously try to do our simran throughout the day and improve upon our simran. The mind, of course, does not like to do the simran. So initially, you have to force the mind to do the simran. And only when you force your mind to continuously do your simran, then it will start doing it eventually. Babaji has also said that you have to be you have to be very resolved to do your simran and stubborn to do your simran. You should not give away to your mind, and in be stubborn to ensure that you do your simran all the time. Force your mind to do your simran, and then eventually, after a point, the mind will start doing it on its own, and that's how you will be able to go within and manifest your master within. क्योंकि एक भक्त की लड़ाई और किसी के साथ नहीं है, एक ऐसे दुश्मन से के साथ है जो दिखता तो नहीं लेकिन मार बहुत तगड़ा मारता है। कहते हैं जो बेगर सिर का दुश्मन है। और तो कहते हैं एक भक्त का एक सत्संगी का लड़ाई मन के साथ है, और अपना शत्रु अपने अंदर ही बैठा है। So the masters say that for a disciple, the fight is not with anyone outside. The enemy here is such an enemy that you cannot see, and when that enemy attacks you, he gives you such a blow that it is very difficult to recover from those blows. So you cannot see that enemy and fathom that enemy. So that is your fight, that is your meditation. You have to overcome that foe. कबीर गुरु की भक्ति बिना दृग जीवन संसार, कबीर गुरु की भक्ति बिना दृग जीवन संसार।
जातन लागे बार जातन लागे मार राधा प्रसाद A small I have a few announcements. Firstly, in this hall, please allow others also to shift and sit in the front. So please follow this rotation. And second thing is that where we go for a walk outside, please do not throw garbage outside the wall. There are bins which are kept near the langar. We will probably relocate those bins, but please throw all your garbage in those bins. Today also someone threw garbage outside the wall, so please uh, refrain from throwing the garbage outside the wall. We have garbage bins. Yeah. Yes, you go right side. When you go out of the gate, you go right side in the small garden, or how to say, and we have two groups, plastic and paper, and mixed garbage. No, where are the bins kept now? When you go out on the gate, Outside the main gate. immediately right side. Right side of the means you have to go outside the ashram, and on the right side there are bins kept there. You can throw it in those bins outside. And there are separate bins kept for compost and plastic. So please accordingly throw your waste. Bernard ka? Oh. छान आहे